Okay. Now we can see the dynamic lift in the aeroplane, or we can say aerofoil or lift on aircraft wing. So before that, let us recall this diagram. देखिए non-uniform tube है, तो when the streamline comes closer, streamline बहुत पास में आ गई तो velocity goes up. यहाँ पे streamlines they are at larger distance, तो velocity is less, है ना? V1 and ये V2. So V1 less than V2, है ना? So when the streamlines are coming closer, they move faster in case of the fluid flow. All right. So that point will be useful to explain the dynamic lift in the aeroplane. तो ये तो उन्होंने NCERT book में उन्होंने बहुत briefly दिया है. Let's see what they have written. Then we'll see the other diagram. Streamlines do crowd together above the wing more than those below the wings. And यहाँ पे देखो crowding is more. यहाँ पे less है. The flow speed on the top higher than that below it. यहाँ पे velocity is fast. यहाँ पे थोड़ा कम है. So there is an upward force resulting in the dynamic lift of the wings, and this balances the weight of the plane. The following example, ये क्या है? What is it? This is the wing, cross-sectional area of the wing. So let's see the full diagram. चलो ये मैंने बनाया ऐसा. ये आपका एरोप्लेन है, ये उसके इंजन लगा दिए मैंने यहाँ पर. इंजन या तो हटा देते हैं. It is causing confusion. हाँ ठीक है. तो हिडन इंजन है. तो it is moving in this direction. Now यहाँ से air that what is called air particles will be separating. तो यहाँ पर जो air velocity है, it will be less crowding here, more crowding. So velocity is more here. तो यहाँ पे suppose हम pressure लिखे P1 this side, और यहाँ पे velocity V2 is less. यहाँ पे pressure P2 लिखे. तो since V1 is greater than V2, therefore pressure above the wing is less than pressure below the wing. यहाँ पे जो प्रेशर ड्रॉप होगा, ज्यादा ड्रॉप होगा, प्रेशर कम हो जाएगा. यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर से काफी कम हो जाएगा. यहाँ पे P2 जो है थोड़ा ड्रॉप होगा. इट विल बी मोर प्रेशर, इट विल बी क्लोज टू द 1 एटमॉस्फेयर. तो नीचे का प्रेशर मोर है, ऊपर का लेस है. तो देयर कम्स द डायनामिक लिफ्ट. नीचे का प्रेशर मोर है, तो इट विल बी P2 minus P1. नीचे जो प्रेशर है ऐसे लग रहा है, ऊपर प्रेशर ऐसे लग रहा है ना एटमॉस्फेयर का. तो लेकिन यह ड्रॉप हुआ है प्रेशर में. तो दैट प्रेशर ड्रॉप, ये बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया, ये कम ड्रॉप हुआ है. तो नेट प्रेशर विल बी अपवर्ड. इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बी डायनामिक लिफ्ट. ठीक है. प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करो, ए विल बी द एरिया ऑफ द विंग्स. तो ये किसको बैलेंस करेगा? अपवर्ड डायनामिक लिफ्ट विल बैलेंस द वेट ऑफ द प्लेन, विल बैलेंस द वेट ऑफ द प्लेन. ठीक है. mg, ये वेट ऑफ द प्लेन को बैलेंस कर लेगा. ठीक है. V2 less, therefore P2 more. Therefore P2 more है ना. यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहेगा ऊपर एज कंपेयर टू अबव. तो वेट कैसे बैलेंस होगा? वेट विल बी द प्रेशर डिफरेंस, दैट विल बी P2 minus P1 multiplied by area of the wings. ये टोटल एरिया ऑफ द विंग्स. तो बर्नौलीज इक्वेशन से प्रेशर डिफरेंस विल बी nothing but half rho V1 square minus V2 square. A the total area of the wing. प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला, अगर प्रेशर डिफरेंस डायरेक्ट दिया तो इधर डायरेक्ट पुट कर देंगे. अगर वेलोसिटी दी है अबव द विंग एंड बिलो द विंग, देन वी विल कैलकुलेट चेंज ऑफ प्रेशर
इसके बराबर आ जाएगा फिर, ठीक है। ए द एरिया ऑफ बोथ द विंग्स, टोटल एरिया ऑफ द विंग्स। इसलिए विंग्स बड़े बनाने पड़ते हैं, इधर दोनों तरफ है तो बड़ा, जितना ज्यादा लोड उतना ज्यादा एरिया ऑफ द विंग्स, बिगर विंग्स। कार्गो प्लेन में बड़े बड़े विंग्स रहेंगे, फाइटर प्लेन में लोड कम होता है तो छोटे विंग्स से काम चल जाता है। बॉम्बर जो होता है बॉम्ब ड्रॉपिंग के लिए, दैट अगेन इज बिगर वन। और जो नॉर्मल फाइटर है, दे हैव द मिसाइल कनेक्टेड इन दैट, दे आर नॉट दैट हैवी, तो उनके विंग्स छोटे हो सकते हैं। तो विंग एरिया मैटर्स फॉर मोर लोड, मोर एरिया ऑफ द विंग्स। विंग्स का क्रॉस सेक्शन ऐसे देखें, इफ यू हैपन टू विजिट क्लोज टू द विंग्स, आप देखोगे ध्यान से ऐसे रहेंगे, नीचे से ऑलमोस्ट फ्लैट है, ऊपर से कर्व्ड आते हैं। Got Yes, it? So I have made the complete diagram, and in your textbook this part of the wing, cross sectional area of the wing is shown. तो यहाँ पे crowding आप देख सकते हैं डायग्राम में। Yeah, clear to everyone? sir, I had a question. You can use this formula. Yeah. Sir, sometimes the wings of plane are at different angles. Like this one is 180 degrees, but sometimes they are slanting, like in domestic planes, or sometimes they are even attached to the plane, like the Concorde or something. So, how does that affect the aerodynamics of a plane? Wings, that wings total area is interested in total area. It can be like this, it can be to increase the like this, so further area will be increased like this, और एरिया बढ़ गया, एरिया मोर हो गया, नीचे का जो एरिया होगा ना, बिलो जहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है, that area. So you can make any, but cross sectional area will be like this. Cross sectional area will be like this. ठीक है? Okay, sir. Alright. तो बड़ा करने के लिए that and swing wing भी होते, बहुत सारे डिजाइन हो सकती है. It can be many design. Yes, sir. Sometimes, like in the olden times, they had about 3 or 4 wings on a plane, and that plane used to have वो a wing designing at the part, back. but in every designing part can be there, but every wing will have cross sectional area like this. Then only dynamic lift will be obtained, otherwise not. All right. Yes, sir. So that's how it goes. ठीक है? इसका क्वेश्चन करके देख सकते हैं, वी कैन सी द क्वेश्चन। यहाँ पे कंप्यूटर जनरेटेड इमेज भी है, हाउ दिस पार्टिकल्स और यहाँ पे देखो, दिस पार्ट एयर पार्टिकल्स आर सेपरेटिंग फ्रॉम हियर, एंड दिस पार्टिकल इज एबल टू रीच हियर, एंड ये वाला पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा है, बिकॉज वी हैव सीन यहाँ पे क्राउडिंग ऑफ एयर is responsible for the fast movement. So this is the computer generated image, which is already explained to you why the air is faster above the wing, है ना? तो देखो ये क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक का। A plane is in the level flight at constant speed and each of its two wings have the area of 25 meter. So total area will be 50, है ना? डबल करना पड़ेगा, each wing का 25 है, each wing is having 25, so total area will be double of this, plus 25, you know, so 25 plus 25 50 हो जाएगा इसका। If the speed of air is 180 kilometer over the lower wing, and उसको लोअर विंग बोलेंगे यहाँ पे, ये जो है ना, ये लोअर विंग, ये अपर विंग, तो and 234 kilometer per hour over the upper wing,
ऊपर उसके विंग के ऊपर 234 है। डिटरमाइन द प्लेन्स मास, टेक द डेंसिटी ऑफ एयर 1 ऐसा यूनिट है ना। तो बर्नौलीज इक्वेशन, यहाँ से P2 प्रेशर डिफरेंस निकाल लेंगे हम लोग, P2 माइनस P1 हाफ रो, ये आ जाएगा। रो दिया है आपको, वेलोसिटी दी है V1 इज द फास्टर विच इज अबव द विंग, है ना, और ये बिलो द विंग है। तो यहाँ से आपको प्रेशर डिफरेंस मिल गया। फिर अगेन अभी जो हमने डिस्कस किया, द वेट ऑफ द ओके द डायनामिक लिफ्ट इज, एक मिनट ये हटा देते हैं, जस्ट लेट मी। तो ये अभी हमने फार्मूला लिखा था ऊपर, डायनामिक लिफ्ट वेट ऑफ द विंग इज mg, और ये अपवर्ड दिस इज द, यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है ना हमने, दिस इज द डायनामिक लिफ्ट, दिस इज द वेट, बोथ शुड बी इक्वल। तो इक्वेट कर दिया हमने ये, तो इक्वेट कर दिया, g को नीचे शिफ्ट कर दो। नाउ यू कैन पुट ऑल द वैल्यूज, अब पूरी वैल्यू पुट कर दो, एवरीथिंग इज गिवन इंक्लूडिंग डेंसिटी एंड बोथ द वेलोसिटीज एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डेंसिटी 1 दी है, V1 इज किलोमीटर में है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द मीटर पर सेकंड ये, एंड V2 आल्सो कहाँ गई है ना, उसको मीटर पर सेकंड में, टोटल एरिया हमने मैंने बताई दिया आपको, टोटल एरिया विल बी 25 प्लस 25, एरिया ऑफ द विंग विल बी, टोटल एरिया विल बी 25 प्लस 25, 50 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे 50 पुट कर देंगे, G10 ले सकते हैं, तो सॉल्व कर सकते हैं कितना मास है, हाउ मच मास ऑफ द मैक्सिमम मास it can balance at that conditions। ठीक है, calculations are slightly more, but you know could you understand the concept of the aeroplane flying? अगर इंजन उसके खराब हो जाते हैं तो ये जो स्पीड है, सपोज देयर इज द इशू ऑफ द इंजन, इंजन रहेंगे, हैवी प्लेन रहते तो 4 इंजन रहते हैं, तो ऑल आर साइमल्टेनियसली ऑन, और नॉर्मल प्लेन में 2 इंजन रहते हैं ना। If one flames out, suppose एक बंद भी हो गया, तो one engine can manage the whole load. If both engines go or flaming out, then problem comes. The speed कम हो जाएगी, ये जो रिएक्शन से चलता है, इंजन नीचे जो इंजन लगे होते हैं उसका स्मोक आगे, और फॉरवर्ड फोर्स थ्रस्ट आगे है ना, the smoke is going this side and thrust is this side, forward force is this side. So that if this speed drops, the speed above and below the wing will also drop. Then this speed drops, so it cannot manage the weight, it cannot balance the weight of the plane. It has to come down. It is just, then it can come down and it can lose the control. Pilot can lose the control. The flames are off. I mean, engines are off due to some reason, some technical problem. So it has to move continuously with the required speed in order to get the dynamic lift. Sir, Yeah. what will happen if the cross-sectional area, like it is shown, if it is the other way, like the broad side is at the back and the narrow side is at the front? What will happen then? It cannot take off, then it will be on the ground, it will be running like a vehicle. And lift मिलनी चाहिए ना उसको, Yes, sir. Sir, छोटा won't कर it दिया take cross off section area, backwards? it will be applying the more force towards the ground. It will create more reaction force from the ground, you know. Yes, sir. Wings के ऊपर से नीचे प्रेशर लगेगा ना। Yes, sir. ठीक है, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर डायनामिक लिफ्ट। अच्छा, ये हेलीकॉप्टर कैसे उड़ते? तो इट मींस आई वाज टेलिंग यू द एरोप्लेन कैनॉट रिड्यूस द स्पीड, otherwise from the certain value, otherwise dynamic lift will decrease, it has to come down, it cannot stand still and fly, है ना, हवा में रुक के fly नहीं कर सकता, it has to continuously move in order to get the dynamic lift. But what about the helicopters?
हेलीकॉप्टर का जो प्रिंसिपल है वो डिफरेंट है. इट इज नॉट, दे आर नॉट ऑपरेटिंग by the Bernoulli's equation. They are operating by the rotor is there above the wing, that above the helicopter rotor होता है, बड़े बड़े blades है. We call it rotor. So they keep on rotating and thrusting the air downward. So air is reacting upward. Action reaction of the air. तो वो action reaction से चलते हैं. They can stand still also. They can keep the air pushing down. Air can be reacting upward. They can balance the weight. They don't have to continuously move forward. So they are not, helicopters are not working, that their principle is not based on the Bernoulli's equation. All right. So now next topic is the viscosity. Next topic क्या है? Viscosity of the fluid. So if I give you one example to understand the viscosity. Suppose यहाँ पे आपने water inclined surface पे डाला तो it will come faster. But if you put honey here, it will come very slowly. बहुत धीरे धीरे आएगा. तो we say honey is more viscous. So viscosity is nothing but a friction between the layers of the fluid. When fluid flows, so there is the friction between the layers of the fluid flowing, and that is nothing but a viscosity. आप bucket में पानी लेके उसको rotate कीजिए, तो after some time it will stop because of the air, because of the resistance between the layers. If it is ideal, it will keep on rotating and whole day, but it comes to the rest after some time because of viscosity between the layers of the fluid. So that is called viscosity. So it is the resistance to fluid motion, and it is the force which opposes the relative motion between the layers of the liquid. तो liquids के बीच में, layers के बीच में resistance होता है. How do we define viscosity? How do we measure it? Like friction is measured by coefficient of friction. Similarly, viscosity is measured by the coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity is nothing but a ratio of the two physical quantities which we are going to see. Let's see. एक experiment, एक situation लेते हैं to define the coefficient of viscosity. देखो, हमने एक, we take the two glass plates. एक plate को हमने ये glass plate ले ली, or you can take the metal plate also, no problem. इसको fix कर दो. यहाँ पर fluid डालो. They are shown very wide layer, but generally it is very thin layer only. Fluid layer डाल दी यहाँ पे, ऐसे fluid layer है, fluid की patch है, और एक ऊपर भी plate है. Suppose you move this plate forward, तो air जो liquid है यहाँ पे stick हो जाएगा इसके साथ, and it will start moving. If you slide this plate, तो this layer will be moving along with this. नीचे वाली थोड़ी सी पीछे रहेगी, नीचे वाली और थोड़ा सा backward, थोड़ा सा behind, like this. They will have velocity gradient, velocity difference. सबसे नीचे वाली layer तो stick हो जाएगी इधर. So it is at rest. Top layer is moving fastest because of it is sticking to the moving plate. ये वाली plate ऊपर वाली. इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ. ये plate है, ठीक है. This is 6. और एक ये which is moving with the velocity v. ठीक है. और ये आपकी liquid film है. Liquid film है ना. और ये area of contact area is A, velocity is V, और ये जो difference है दोनों, thickness of the liquid layer is L. ठीक है. So let's see introduction part जो मैंने भी आपको explain किया है, वो that we have to see what else is there. ठीक है. तो यहाँ पे देखो जो मैंने आपको explain किया हुआ है, एक मिनट थोड़ा सा, let me, yeah, consider fluid
consider fluid like oil between the two glass plates in which lower one is fixed while the top plate is moved with the constant speed v. ठीक है. Now इसका हमें फोर्स F लगाना पड़ रहा है इसको मूव करने के लिए because they have some friction, so we have to apply the force F. और ये एरिया ऑफ कांटेक्ट, ये जो है दिस एरिया ऑफ कांटेक्ट इज A. यहाँ पे जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है A है. तो देयर विल बी द shear stress. हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में shear stress. That shear stress part is deleted in our course, but we need it here, therefore we have done it. Shear stress is force, tangential force upon area. Do you remember or not? Shear stress is Yes, sir. tangential force upon area. So F upon A, and shear strain is कितना relative motion हो गया उसका delta x, and L is the distance between two layers. So shear stress is the relative displacement upon distance between the top and bottom layer. तो ये हो गया, L is the thickness here, so that L is coming here. तो shear rate मतलब टाइम से डिवाइड करना है, डेल्टा टी से डिवाइड करना पड़ेगा. तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी विल बी नथिंग बट ए वेलोसिटी. डेल्टा वी इज वेलोसिटी डिफरेंस. इन फैक्ट डेल्टा वी इज द वेलोसिटी डिफरेंस. या है ना, यहाँ पे v 0 है, यहाँ पर v है. तो v द वेलोसिटी ऑफ द टॉप यहाँ पे टॉप के लिए इतना डेल्टा एक्स आ रहा है ना, तो इसलिए v द वेलोसिटी ऑफ द टॉप लेयर है ना. एंड v by l is called velocity gradient. क्योंकि यहाँ पे 0 है और इतने लेंथ के, इतनी डिस्टेंस के साथ v हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं ना, तो टॉप वाले की v है एंड here is the l. तो velocity gradient, any physical quantity divided by the distance is called that gradient. लेंथ के साथ डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रही. तो v by l is named as a velocity gradient. Can you see here? If somebody asks you find out the velocity gradient, तो velocity को distance के साथ divide कर देंगे, कितने distance के लिए velocity gradient पूछो. ठीक है. तो now coefficient of viscosity is the ratio of these two physical quantities, shear stress and strain rate. इनका जो ratio है, that is nothing but a coefficient of viscosity. Do we have the time or we have to do it tomorrow? Viscosity of fluid. Just we'll close within 1 minute. देखो यहाँ तक ओके है. Things are clear so far. यहाँ पे हमने फोर्स F लगाया, ये इसको फोर्स F लगाना पड़ रहा है हमें, और एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट इज A. तो shear stress बन गई यहाँ पर, और ये डेल्टा एक्स अपॉन L इज वी कॉल इट स्ट्रेन रेट. उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे. आई मीन ये shear strain होगा, टाइम से डिवाइड कर दिया तो स्ट्रेन रेट मींस टाइम से डिवाइड किया. बट डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज नथिंग बट ए वेलोसिटी, और v by l हो जाएगा. यहाँ पे l डिनोमिनेटर में आ रहा है, एंड v by l इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट. इसका नाम है वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी v द वेलोसिटी ऑफ द टॉप लेयर, L is the distance between top and bottom layer, that is the thickness of the fluid film. टर्म समझ में आ गए सारे आपको? Yes, sir. आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो नेक्स्ट टर्म वी विल डिफाइन टुमारो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ये इन दोनों का रेशियो रहेगा, बट वी विल डू इट टुमारो बिकॉज यूनिट्स एंड ऑल आर टू बी एक्सप्लेन प्रॉपर्ली इन दैट केस. तो यहाँ पे क्लोज कर दें. Okay, ठीक sir. है. So tomorrow we'll Yes, continue from here. This much if you have any doubt, you can ask quickly. Then we'll wind up. No doubt, sir. Okay then. ठीक है then. Closing now. Okay, thank you, sir. Okay.